Okay, in the last lecture we learned about n go back and selective repeats. Okay, go back in that go back ની અંદર કેવું હતું કે તમારે કોઈ પણ વચ્ચે પાઇપલાઇન હોય, ઓકે, એની અંદર લીકેજ હોય તો આખો ફ્લો છે એ બંધ થઈ જાય અને જ્યાંથી અટકેલ હશે ત્યાંથી જ રિપીટ થશે. સપોઝ કે મારી કને 1 2 3 4 5 ફ્રેમ છે, હવે સેકન્ડ ફ્રેમ છે એ મારી લોસ્ટ થાય છે, ડેમેજ થાય છે, કોઈ એરર આવે છે, ઠીક છે, તો રિસીવર હશે એ સેન્ડ કરશે નોન એકનોલેજમેન્ટ. હવે નોન એકનોલેજ જશે પેલા સેન્ડર કરે તો સેન્ડર શું કરશે, જે 2 3 4 એની પાછળની બધી ફ્રેમ હશે એ રિસીવરને સેન્ડ કરશે. સિલેક્ટિવ રિપીટમાં શું હતું, સેકન્ડ પેકેટ છે એ લોસ્ટ જાય છે. હવે એનો જ્યારે ટાઈમ પૂરું થઈ જશે, સેકન્ડ પેકેટનો જે ટાઈમર દીધેલ હશે એ પૂરું થઈ જશે ત્યારે જ છે સેન્ડર હશે એ એને રિપીટ કરશે. ઓકે, પેકેટને ટાઈમર પૂરું થઈ જશે ત્યારે જે પર્ટિક્યુલર ફેઇલર થયું છે એ જ પેકેટને એ સેન્ડ કરશે. અને ત્યાં સુધી એના પછીના જેમ કે આ સેકન્ડ લોસ છે કે 3 4 5 છે એ બધા ક્યાં હશે, રિસીવરના બફરમાં સ્ટોર થશે. જ્યારે એને શું કહેવાય મળી જશે, સેકન્ડ પેકેટ મળી જશે ત્યારે એ પોતે ડિલિવરી કરી દેશે. ત્યાં સુધી એ જે પેકેટ હશે એને ક્યાં રાખશે, બફરમાં રાખશે. આ સિલેક્ટિવ હતું. હવે એની અંદર એનો કમ્પેરિઝન છે સ્ટોપ વેઇટ, ગો બેક એન્ડ સિલેક્ટિવ રિપીટનો. ઓકે, તો સી અગર સેન્ડિંગ વિન્ડો સાઇડ જોઈએ તો સ્ટોપ વેઇટમાં શું હતું, 1 ફ્રેમ જાય અને 1 ફ્રેમ આવે, ઠીક છે, સેન્ડ રિસીવ એન્ડ ધેન એકનોલેજમેન્ટ આવે ત્યારે સેકન્ડ ફ્રેમ જતી હતી. ગો બેક એન્ડમાં શું હતું કે તમારી જેટલી હોઈ શકે એટલી તમે એને મૂકી શકો છો. ઓકે, સિલેક્ટિવ રિપીટમાં શું હતું, જેટલી તમારી સાઇઝ છે ફ્રેમની એ બધી તમે મૂકી શકો છો, એટલે 2k એટલી કા ઇક્વલ કા એનાથી ઓછી. હવે રિસીવર વિન્ડોમાં શું હતું, ત્યાં એટ અ ટાઈમ એકનોલેજમેન્ટ મૂકે છે ત્યારે જ એની પાસે બીજી ફ્રેમ આવી છે. ગો બેક એન્ડમાં શું હતું, 1 ફ્રેમ હતી અને સિલેક્ટિવમાં શું હતું, એઝ ઇટ ઇઝ 2k ટાઈપ. અહીંયા ગો બેક એન્ડમાં 1 ફ્રેમ કેવી રીતે કે જેટલી પણ ફ્રેમ હશે એ બધાનો એકનોલેજમેન્ટ એક સાથે આવશે. ગો બેક એન્ડ સિલેક્ટિવ રિપીટનો ડિફરન્સ છે કે ગો બેક એન્ડ શું છે કે ઓલ રીટ્રાન્સમિશન ઓફ સક્સેસ ફ્રેમ અલોંગ વિથ ધ લોસ્ટ ઓર ડેમેજ, જે સક્સેસ થઈ ગઈ છે એને પણ આપણે રીટ્રાન્સમિટ કરતા હતા. જ્યારે સિલેક્ટિવ રિપીટમાં શું હોય છે, જે ડેમેજ થઈ છે એને જ આપણે રીટ્રાન્સમિટ કરશું. પછી સેન્ડર ડઝ નોટ રિક્વાયર એની લોજિક ટુ સિલેક્ટ સ્પેસિફિક ફ્રેમ ફોર રીટ્રાન્સમિશન. અહીંયા એ લોજિક રિક્વાયર્ડ કરશે કે કઈ ફ્રેમ રીટ્રાન્સમિટ કરવી છે. પછી આ એક્સપેન્સિવ નથી, ઓલું એક્સપેન્સિવ છે. રિસીવર ડુ નોટ રિક્વાયર એની શોર્ટ ઓફ સ્ટોરેજ. આની અંદર શું હતી, બફરની સિલેક્ટિવમાં જરૂર હતી. ઓકે, નાઉ ટુડેઝ ટોપિક ઇઝ અ TCP સેગમેન્ટ સ્ટ્રક્ચર. Okay, we all know about TCP. TCP is the protocol, transmission service protocol, and it's used in the transport layer protocol. Okay, also TCP is a connection oriented transport. Okay, TCP the second name is what, connection oriented transport. Okay, TCP is a connection oriented protocol and UDP is a connection less protocol. These are known from our chapter 1. Okay, TCP provide a connection oriented service, reliable data, byte stream data. Okay, and two application using TCP for establish the connection to each other or exchange data. See, this is the IP packets. Okay, this is basically a TCP data. Okay, how to encapsulate a TCP data. In that word, TCP and UDP use the same network. Okay, which network is the IP network, network layer. Okay, TCP provide totally different service. TCP provide
Okay, TCP does not provide multicasting or broadcasting. The application data broken into segment. Okay, our message is divided into small parts, and that small part is called, a segment. Wait 1 minute. Priyanka ma'am. Okay. When TCP send segment, it maintain a timer waiting for other end and receive acknowledgement. And at the receiver side, what? Receiver waiting for incoming signal and send the output. Output sends acknowledgement if we receive the proper packet. So it send acknowledgement to the sender. Okay, TCP segment are transmit IP datagram. Okay, see IP datagram, and since IP datagram can arrive out of order, TCP segment can arrive out of order. If IP datagram can arrive out of order, then also TCP arrive out of order, means no acknowledgement provide. See, sender is sending, but receiver can't catch that speeds. Okay. TCP also provide flow control. Each end of TCP connection has a finite amount of buffer space. Okay. Also a stream. A stream is a 8-bit bytes. It's exchange across TCP connection. Okay, that TCP connection and the TCP connection between two applications. TCP connection is between two applications because we exchange the data. Okay. Now see, this is the TCP encapsulation. The how TCP work in that IP header, TCP header, TCP data. This is a TCP segment structure. See, TCP segment structure is 32 bits. Okay. Here see, one is the source port. So source port is specify the application sending the segment. This is a different from IP address. ओके, दिस इज द सोर्स पोर्ट एड्रेस, मीन्स हमने जो किया था ना पोर्ट का एड्रेस होता है, जैसे कि हमारा HTTP है तो उसका कितना है 80, FTP है तो उसका है 21, ये उसका पोर्ट एड्रेस है। डेस्टिनेशन पोर्ट का भी वही है, जैसे उसका पोर्ट नंबर होगा, ठीक है, तो वो वेल नाउन पोर्ट होगा, ठीक है, और उसकी रेंज क्या होगी 2 बिलो होगी 256 से, और उसका जैसे कि 21 है उस FTP के लिए वही, यहाँ पे सेंडर होगा उसका पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट पे रिसीवर का पोर्ट एड्रेस। ओके, फिर आता है सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर में क्या होगा, TCP सेंड इज अ नंबर। ओके, TCP सेंड इन नंबर, सीक्वेंस नंबर रैप बैक टू 0 आफ्टर। ओके, સિક્વન્સ નંબર ઇન સેન્સ કે આપણે જે ફ્રેમ સેન્ડ કરીએ છીએ, બરાબર, કોઈ બી ફ્રેમ હશે એને સેન્ડ કરશું તો એની અંદર આપણે નંબર આપશું ને, એ નંબર કેમાં આપશું, સિક્વન્સમાં આપશું। સિક્વન્સ એકનોલેજમેન્ટ નંબર, તો જ્યારે સેન્ડ કર્યો ત્યારે રિસીવર આપણને એકનોલેજમેન્ટ આપશે। સી, આ બધું આપણે લાસ્ટ ફિગર હતી, મીન્સ લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ કાલના લેક્ચરમાં એમાં આપણે જોયો છે એકનોલેજમેન્ટ નંબર। તો એ શું હશે, સિક્વન્સ નંબર ઓફ નેક્સ્ટ ડેટા। સિક્વન્સ નંબર, સપોઝ કે મારું ફ્રેમ 2 છે એ રિસીવ થઈ ગઈ છે અને થર્ડ ફ્રેમ આવવાની છે। ઓકે, તો નેક્સ્ટ ડેટાનો સિક્વન્સ નંબર અને સેન્ડર એક્સપેક્ટ ટુ રિસીવ ઇફ એકનોલેજમેન્ટ બીટ ઇઝ સેટ। ઓકે, header length, after header length, okay, so header length is 32 bits or 32 bits। See, is after reserved, okay, some data is reserved, so that for reserved for future use। Okay, are now using a TCP, okay,
TCP. TCP 6 flag bits. See UA, PRSF. This is the 6 flag. Okay. Okay. Now you see first URG. Okay. Urgent data is a urgent pointer is valid if it's at 1. If urgent data, then we put here 1, but generally it's not used. After A means acknowledgement है, acknowledgement bit set to 1. Okay. If acknowledgement is our valid, then we 1. Otherwise we, if non-acknowledgement, then we 0. After that P. Okay. PSH, push data now. Receiver should pass data to application as soon as possible. Okay. Generally it's also not used. After R. Okay. R means reset, synchronize and find. Okay. Reset means reset the connection between the two nodes. Okay. Used for reject, accept. Okay. After the synchronization, okay, the connection request synchronize, then it's take 1, acknowledgement is 0. Okay, and this is called piggybacking. Fine. Okay, it's fine means finite. It's release the connection means finish करेंगे connection को, ठीक है, और ये specify होगा sender is finish the sending data. After that window size, receiver window size. Okay, used to control the flow of data and conjunction. Okay, flow control and conjunction is our next topic, and we learn into Monday. Okay, this is the used control the flow of data and conjunction. After checksum, okay, checksum. So checksum is used for error detection. Okay, then urgent URG data pointer. So URG flag bit is set if there is in that in that U. Okay, we set bit the segment contain urgent data, meaning to receiving TCP entity must deliver it to higher level. क्या होगा, अगर हमें लोअर लेयर चाहिए तो वो डिलीवर होगी हायर लेयर में, ठीक है। तो हमारा जो भी लेयर होगा, यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का हायर लेयर कैसा हो, कौन सा होगा, एप्लीकेशन लेयर। ओके, फिर ऑप्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे वेरिएबल लेंथ दी गई होगी, क्योंकि यूज टू प्रोवाइड अदर फंक्शन दैट नॉट कन्वर्ट बाय एनी हेडर्स और डेटा। तो डेटा वो भी उसकी जो वेरिएबल लेंथ ही होगी किसी भी डेटा की, ठीक है। अब टीसीपी हेडर होगा वो नॉर्मल साइज क्या होगी, 20 बाइट्स की होगी नॉर्मल साइज। ओके, और टीसीपी सेगमेंट होगा वो कंटेन करेगा, सी ओके, ये सब हम पढ़ गए अभी। ठीक है, उसके बाद आता है टीसीपी प्रोटोकॉल। ओके, तो टीसीपी प्रोटोकॉल में क्या होगा, सेंडिंग एंड रिसीविंग टीसीपी एंटिटीज एक्सचेंज डेटा, मीन्स दो नोड होंगे, दो एप्लीकेशन होगी, वो एक्सचेंज करे डेटा इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट। ओके, उसकी फिक्स साइज क्या होगी, 20 बाइट। ओके, तो इच सेगमेंट, ओके, इच सेगमेंट होगा वो फिट का किस वैल्यू में होगा, तो 65,515 उस वैल्यू पे वो फिट होगा। और ये जो फिगर है वो किसकी है, तो कैसे कनेक्शन होगा वो इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, उसी के है। तो ये कहाँ है, 3 वे हैंड शेकिंग है, ठीक है। पहले यहाँ पे सेंड होता है, फिर रिसीव आता है, और फिर वो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी सेंड होता है, ठीक है, कि मुझे वो मिल गया है। सेंडर अपना डेटा देगा, रिसीवर उसे भेजेगा, मिल गया, और वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिला कि नहीं, उसके लिए भी वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है। सी, तो इसमें क्या होता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश यूजिंग 3 वे हैंड शेकिंग, ठीक है, फिगर 1। ओके, द ट्रांसमीटर सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट, ट्रांसमीटर सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, SEQ में X लिख दिया,
क्योंकि वो हमारी एक फ्रेम हो जाएगी। टू स्टार्ट कनेक्शन विथ ट्रांसमीटर मैसेज आईडी क्या होगी, x होगी। वहाँ पे हमने x क्यों रखा है, क्योंकि वो हमारी मैसेज की आईडी है और हम सिंक्रोनाइज करेंगे कि ये कनेक्शन है, हमें इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। फिर रिसीवर होगा वो रिप्लाई देगा, ठीक है। तो रिसीवर रिप्लाई करेगा और उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करता है तो वो उसकी आईडी क्या देखेगा, y, और एक्नॉलेजमेंट देगा। किसका एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, जो हमारा यहाँ पे मैसेज आईडी थी x, उसको +1 करके उसका एक्नॉलेजमेंट देगा, ठीक है। अब फाइनली क्या होगा कि जो ट्रांसमीटर होगा वो कंफर्म करेगा कनेक्शन, ओके। तो वो क्या करेगा, जो सेंडर से आया है, ठीक है, उससे तो वो x+1 करेगा ही, साथ में वो y वाला जो रिसीवर होस्ट 2 ने भेजा है उसे भी वो 1 करके भेजेगा, ठीक है। इफ रिसीवर वांट टू रिजेक्ट x, if receiver want to reject x, it would send reject, okay, it would send reject, or if sender reject y, then also send reject y message, okay। यहाँ पे जो हैंडशेक हो रहा है, ठीक है, वो ट्रांसमीटर और रिसीवर वो स्पेसिफाई होगा मैक्सिमम सेगमेंट साइज का। अब मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या होगा हमारा, 1460 का ये मैक्सिमम हमारा साइज होगा। किसका, मैक्सिमम सेगमेंट साइज हमारा, ठीक है। जो टीसीपी कनेक्शन होगा वो फुल डुप्लेक्स को कनेक्ट करेगा। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, एट ए टाइम सेंडिंग और रिसीविंग दोनों हो सकती है, ठीक है। इस्टेब्लिश करेगा, रिलीज करेगा कनेक्शन को, ठीक है। ये कुछ इसका फाइनाइट स्टेट है, उसके स्टेट्स है। तो क्लोज है, लिसन है, रिसीव्ड का है, सिंक्रोनाइज कर रिसीव, जैसे क्लोज में होगा तो नो कनेक्शन इज एक्टिव। फिर लिसन का है तो सर्वर इज वेटिंग होगा कॉल के लिए। फिर सिंक्रोनाइज रिसीव है तो कनेक्शन रिक्वेस्ट अराइज होगी और वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए। फिर ऐसे ही सेंड का है तो स्टार्ट होगा कनेक्शन के लिए। फिर स्टैब्लिश है तो नॉर्मल डेटा होगा वो ट्रांसफर स्टेट में होगा। फिर FIN वेट है तो जो एप्लीकेशन है उसे फिनिश करने के लिए होगा। फिर फाइनाइट वेट 2 है तो जो रिसीवर साइड है वहाँ से वो रिलीज होगा। फिर टाइम्ड वेट है तो वेट फॉर ऑल पैकेट ऑफ डाई, मतलब जो वेटिंग जो टाइमर होगा वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, क्लोज वेट, लास्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। जब पूरा क्लोज हो जाता है तो लास्ट एक्नॉलेजमेंट। सी TCP होगा, अगर वो कनेक्शन रिलीज करता है, ठीक है, TCP होगा वो कनेक्शन रिलीज करता है तो उसके 4 स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि तो फर्स्ट स्टेप है उसका, ठीक है। तो TCP करेगा, सेंड करेगा फर्स्ट सेगमेंट फाइन से, ओके, सेगमेंट फर्स्ट फाइन का होगा वो सेंड करेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, जो हमारा सेकंड सेगमेंट तो एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। सेकंड सेगमेंट क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट, वो कंफर्म करेगा रिसीवर के पास कि फाइन सेगमेंट फॉर क्लाइंट, उस क्लाइंट के लिए कनेक्शन को ओवर करना है तो वो। फिर थर्ड में क्या होगा कि जब वो सेंडिंग डेटा सर्वर क्लाइंट डायरेक्शन, व्हेन इट डज नॉट हैव एनी मोर डेटा, अब आगे डेटा नहीं है तो वो उसे क्या कर देगा, फाइन कर देगा। सर्वर होगा वो फाइन कर देगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ से क्लाइंट ने पहले भेज दी है रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो कि मुझे अभी कनेक्शन क्लोज करना है, तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा और यहाँ पे कनेक्शन पूरा भी कर देगा कि अब कोई आगे डेटा क्लाइंट से नहीं आएगा, ठीक है। और ये कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा तब क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से भी कनेक्शन अपना काट देगा, ठीक है। क्लाइंट मशीन होता है, ये TCP और UDP क्या डिफरेंट है। आई थिंक हम जब से नेटवर्क कर रहे हैं तब से मैं इसका ये बोल रही हूँ कंपैरिजन बिटवीन TCP और IP की, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि बहुत IMP होगा। तो TCP और UDP, TCP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड, UDP इज अ कनेक्शन लेस, TCP is a byte stream, UDP is a message stream. TCP does not support multicast and broadcast. UDP support broadcasting. TCP support error control and flow control. UDP does not support both.
TCP full duplex, UDP is not a full duplex, TCP is reliable, UDP is unreliable, TCP packet is called segment and UDP packet called user data packets. Okay. Here basically our TCP is complete. Okay, in that TCP is nothing but one figure of the header. Okay,